Excellencies, before I call on the next speaker, allow me to say a few words in my national capacity. We are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence at least that this cannot be delayed any further. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That said, I thank all council members for their contributions. I now resume my duty as the president of the council. लगाई है और सॉफ्टवेयर पर कहा है कि पीओके में अवैध कब्जा खत्म करे पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए फूल बक सकता है तो ये उसकी गलती। कश्मीरी तो मेरा ख्याल है ना खड़े ना बैठे हैं, वो तो इनकी तरफ देख ही नहीं रहे। और जो कश्मीर हमने रखा हुआ है या हमने जैसे कि भारत के लोग कहते हैं हमने कब्जा कर रखा है, तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान एक अरसे से दुनिया को ये बता रहा है कि भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, मगर दुनिया ने कभी भारत का हाथ नहीं रोका। तो 22 अक्टूबर तक POKभ जिसको ये मकबूजा कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर, तो उसको खाली कर दें। हम अपने उसी जो कुएं हैं उसके अंदर मेंढक की तरह बैठे हुए और यही फुदक के सोच रहे हैं कि बस कश्मीर का इशू हम उठा दें, बाकी काम अपने आप हो जाएगा और उसके बाद हमें जो है वो लोग जाहिर हमारे साथ जो हमारी पब्लिक है वो हमारे साथ हो जाएगी कि हाँ जी हाँ कश्मीर के लोगों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। जबकि अब हुआ ये है कि कश्मीर के बारे में बहुत सी चीजें लोगों को पता लग गई हैं, उन्हें मालूम है कि 76 years of this country we have fought wars, we remained engaged in wars, we fought proxy wars, we remained proxy for decades. 1948, 65, 71, Cold War, war against terrorism, Kargil, पता नहीं कौन सी जंगें। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रोवी ठाकुर चैनल। अभी आप देखिए UN में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। भारत ने कहा कश्मीर के मुद्दे पे तभी बात किया जाएगा जब आप POK खाली करोगे, क्योंकि हर बार पाकिस्तान कश्मीर का राग आलापता है कि कश्मीर में ये जो बच्चों पर जुल्म हो रहा है, महिलाओं पे जुल्म हो रहा है, जबकि खुद उनके घर में माइनॉरिटी का अभी 2-3 चर्च जला दिया गया है। माइनॉरिटी पर बेहद जुल्म हो गया, कन्वर्जन हो रहा है, सबका कन्वर्ट करके मुस्लिम बना दिया जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को 10 साल 11 साल की छोटी बच्चियों को कन्वर्ट कर दिया गया है और उसको क्या पता कि क्या धर्म होता है क्या होता है, तो पकड़ के ज़बरदस्ती जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसको गुरुद्वारों पर पत्थर फेंका जा रहा है। वहाँ पर माइनॉरिटी पे खुद बहुत जुल्म हो रहा है और वो UNO में जाके कश्मीर का राग लाप रहा है। तो इस पर एक टुक जवाब जो है दिया गया कि फर्स्ट वैकेट POK देन एनी टॉक। पहले आप POK खाली करो, फिर आपसे कुछ बात किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का द्वारा जो कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने करारा पलटवार जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मामला में दखल देने के कोई अधिकार नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने
पाकिस्तान को 26/11 का आतंकी पर कार्रवाई करने के लिए बोला, जो आतंकी का पनाहगार बना हुआ है। ये और भी इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जितने आतंकी है, बड़े बड़े आतंकी वहाँ से पकड़े गए हैं। उन सब पर पहले कार्रवाई करो, जम्मू कश्मीर का कब्जा वाला इलाका खाली करो, तब आपसे बात किया जाएगा। तो अभी देखिए क्या यूएनओ में भारत ने कैसे पलटवार दिया है, उसको देखिए। और इस खाली करने के लिए बोला गया है। ये सबसे बड़ी वो कश्मीर जो खाली का मुद्दा उठाता है, उसका बहुत सॉलिड जवाब है। मिलते हैं। Reiterated that Jammu and Kashmir is a part of India. Become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Gehlot said, and I quote, Pakistan is at no position to comment on India's internal matters and the country needs to keep a check on its own human rights record. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. India's reply comes as Pakistan's caretaker Prime Minister Anwar ul Haq Kakar brought up its manufactured Kashmir narrative at the United Nations General Assembly on Friday. He said that Kashmir is a key to peace between New Delhi and Islamabad and that United Nations Security Council must secure the implementation of its resolutions on Kashmir. The UN Security Council must secure the implementation of its resolution on Kashmir. The UN Military Observer Group for India and Pakistan should be reinforced. Global powers should convince New Delhi to accept Pakistan's offer of mutual restraint on strategic and conventional weapons. Interestingly, this could be, in all probability, Kakar's first and last address at the United Nations. India has called Pakistan a habitual offender. India says Pakistan is peddling malicious propaganda. Jammu and Kashmir is an integral part of India, is what India has reiterated. Pakistan has a miserable record of human rights. India has hit out at Pakistan for sheltering terrorists. India says Pakistan is home to the largest number of terrorists. Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless